Hello everybody present there in this today AutoCAD class. My name is Subham Gupta. I have brought this class for you. मैं आपके लिए इस क्लास लाया हूँ AutoCAD. आज हम सीखेंगे AutoCAD क्लास में कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं AutoCAD में. ओके, अगर नॉर्मली फर्स्ट स्टेप होता है कि AutoCAD में कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करें. अगर लाइन ड्रॉ आपको करना आ जाता है तो हमें AutoCAD यस हमें पता चलता है कि यस यू नो AutoCAD. ओके, तो बेसिक पॉइंट क्या, आप लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पहले मालूम होना चाहिए. ओके, सो यू हैव टू नो हाउ टू ड्रॉ लाइन. So I'm going to explain how to draw line. So I will draw one figure for you this. Okay, ये draw करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे line draw करते हैं. Okay, so just wait a minute. Yeah. So suppose I want to draw eye section. Okay, so what I will do first, select the command line. Okay, पहले line command को हम क्या करेंगे, select करेंगे. Go to this line or directly type L, shortcut key L, enter. Okay, then click in the screen, drag it. Okay, suppose I need 10. Give 10 value. In this I need 5 value. Okay, suppose I need here 2. Okay, click it here. Suppose I need here 10 again. So you can see the value is increasing. Value दिख रहा है 8 9 10 ऐसा increase हो रहा है. तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका लाइन कितने साइज में है. Okay, click it here again 2, enter, then drag it, then 5, enter. Okay, then give it 10. Okay, so just फिर से 5, click it, enter. Give your value and just see how you are drawing. Suppose I need here 8. Okay, click it here again line. Suppose I need here 8. Suppose 2, enter. Okay, just drag it, give value 10, enter, then again 2, enter, then just meet it. And right click, enter. कमांड से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, just press escape button from your keyboard or directly click right click and enter. Okay, so like this I have drawn this eye section. Okay, तो दिख रहा होगा मैंने स्मूथली कैसे आई सेक्शन ड्रॉ किया. तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, ओनली स्ट्रेट लाइन. ओके, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जो मैंने यहाँ पर कैसे ड्रॉ किया हूँ. ओके, बाय यूजिंग ऑर्थो. ओके, अब ऑर्थो कमांड यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपका ये स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर. दिस इज ऑर्थो ऑन है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही बना पा रहा हूँ. ओके, ओनली परपेंडिकुलर लाइन, नो एनी अदर लाइन ऑन. तो अब मैं क्या करता हूँ, टिल्ट लाइन बनाना चाहता हूँ. तो सिलेक्ट द लाइन. ओके, ऑर्थो ऑफ करेंगे, सिलेक्ट ऑर्थो ऑफ. ओके, नाउ सी, गिव द वैल्यू. नाउ सी, नाउ आई कैन मेक एंगल लाइन. ओके, टिल्ट लाइन. ओके, सो लाइक दिस. स्किप इट, स्किप कर लेंगे. तो अगर आपको फिर से स्ट्रेट लाइन बनाना है तो क्या कर देंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे. सी योर ऑर्थो ऑन और डायरेक्टली टाइप F8. ओके, सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट योर लाइन. नाउ सी, नाउ आई एम ओनली एबल टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. ओके, इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नो टिल्ट लाइन इज अवेलेबल. अगर टिल्ट लाइन बनाना है तो ऑर्थो ऑफ कर देंगे, सिलेक्ट ऑर्थो ऑफ. नाउ सी, हो गया. सो लाइक दिस वी मेक different type of lines. Okay, so in this way we deal with this AutoCAD application and we draw this line. Okay, तो इस तरह से मैंने आपने क्या सीखा आज कि लाइन कैसे बनाते हैं, इसमें ऑर्थो ऑप्शन का क्या इंपॉर्टेंट है. ओके, टिल्ट लाइन और स्ट्रेट लाइन कब कब हम लोग क्या करते बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट. ओके, तो लाइक दिस वी डिड दिस इन टुडे क्लास. ओके, तो ये आज का क्लास में बस इतना ही. तो और नॉलेज के लिए अगर आपको और वीडियोस कंटिन्यू चाहिए, मतलब अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें क्या कीजिए, सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि ये इसे शॉर्टकट वे ऑफ ड्राइंग और ये शॉर्ट वीडियोस आपके साथ में आते रहेंगे. ओके, इसके लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए. ओके, एंड प्लीज शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड. ओके, सो थैंक यू everybody present here. Okay.